रिवर्स दांडी यात्रानो ओबीसी एससी एसटी एकता मंचे विरोध कर्यो छे अने आ रिवर्स दांडी यात्रानी मंजूरी नहीं आपवा रजूआत करवामां आवी छे। साथे ज चीमकी पण उच्चाराई छे कि जो रिवर्स दांडी यात्राने मंजूरी आपवामां आवशे तो आसपासना 70 जेटला गामोना लोको प्रतिकार रेली योजशे अने तेनो विरोध करशे। महत्वनुं छे के 13 सप्टेम्बरे हार्दिक पटेल रिवर्स दांडी यात्रा करवानी जाहेरात करी छे, जो कि हजू सुधी आ यात्राने मंजूरी अपाई नथी। त्यारे हार्दिके सविनय कानून भंग करवानुं पण कह्युं छे, जो कि नवसारीना कांठे विस्तारनी साथे ओबीसी एससी एसटी एकता मंच पण आ रिवर्स दांडी यात्राना विरोधमां छे। एकता मंचना आगेवान अल्पेशभाईनुं कहेवुं छे के रिवर्स दांडी यात्रा ओबीसी एससी एसटी समाजने फरीथी गुलामी तरफ धकेलवानो प्रयत्न छे। त्यारे सरकारने आवी यात्राने मंजूरी नहीं आपवा रजूआत करवामां आवी छे अने प्रतिकार रेली करवानी चीमकी पण उच्चाराई छे। दांडी यात्रा थी स्वतंत्र भारत अंदर आ आजाद भारत अंदर दबाયેલો કચડાયેલો અમારા ઓબીસી એસસી એસટી નો સમાજ આ સમાજને ફરતી ગુલામી તરફ લઈ જવાની આવી ઊંધી દાંડી યાત્રાને એક રાહ ભટકેલો યુવાન જેણે હમણાં જ ગુજરાતની અરાજકતાનો માહોલ પેદા કર્યો હતો, એ અરાજકતાના માહોલમાંથી ગુજરાતની માડ થાળે પડ્યું છે। આવી યાત્રાને મંજૂરી આપવામાં ના આવે અને જો આવી કોઈ દાંડી યાત્રાને મંજૂરી આપવામાં આવશે તો અમારા 70 ગામના અમારા સરપંચો અને અમારા ભાઈઓ બહેનો વડીલો યુવાન દોસ્તો એ સીધી દાંડી યાત્રાના માધ્યમથી दांडी कूच करशे अने आवा प्रकारनी जे परिस्थितिनुं निर्माण थशे एनी सीधी जवाबदारी आयोजकोनी अने सरकारनी रहेशे।